Assalamu alaikum and welcome to this sixth and final day of the 1 week faculty development program on MOOCs content creation. This is the final and valedictory session will be after this practical session. We have some left out topics from screencasting and video editing that we are going to cover in this session. After that, there will be a valedictory session. So in today's lecture, we are going to cover one free, which is free for educational purposes, free screencasting software, that is Loom. I will show you how to avail this Loom and how to use this Loom. Then we will cover video editing. When you have created your videos through screencasting or through some other means, and then you want to edit those videos, you want to remove some unwanted portions from that video, or you want to add some graphical or textual animations to that video, how to perform those things. So for that, you should know the video editing, how to edit your videos. So there are different software that you can use to edit videos, but the basic and fundamental procedure is same. So there are some basic and fundamental things that you should know about video editing. So what is a timeline, how to add different clips to the timeline, and then how to add different effects that I will be showing in this video. So before that, let me share my presentation. Sorry for some delay because I had to download this presentation from the net. So in today's lecture, we are going to cover screencasting part 2 and some video editing software. I will show you how to edit videos if you have different kinds of videos. So these are the topics. First, what is Loom screencasting software and how to avail that and how to use that I will be showing in the practical session. Then we will cover the OpenShot video editor, which is the free open source video editor that you can use to edit your videos free of cost, and some paid video editing software, Camtasia and Filmora. I will be showing you the interface of those video software, how to use those software. And then finally, we will be having a valedictory session. So now, what is Loom? So Loom, it is a screencasting software. It is a paid software, but for educational purposes, it is provided free of cost. You can use this software free of cost. So the website for this software is loom.com. There are both
Chrome extension as well as a desktop application for this software. You can use any of them and to record your videos. But one thing you have to notice that all the videos that you will record will automatically be uploaded to the Loom cloud, and then you can edit them there or download them for further processing. So this is the main interface of the Loom. So I will show you practically in a minute. So this is the update, recent update that Loom has provided regarding the educational license for this Loom. So they have included, so first, previously what you have to do, you have to write a, you have to register with your college email ID or educational email ID, and then you have to send them an email to verify that you are working in some educational institution. But now they have removed that step. Now you can register with your educational email ID as a student or a teacher, and then they will automatically verify that email ID and sorry, and migrate you to the free educational plan. So this is one update, recent update that I got today. Now, what are the features that are provided with your educational software, with your educational license? So you will get unlimited access, but today they post this message that they have put two limits on the educational license. One is you will not be able to record your videos more than 45 minutes. But I think 45 minutes is pretty good, and you can record any kind of video using this 45-minute limit. And then there is a workspace where you can share your videos with your students or other friends or colleagues. For that, there is only one creator per workspace. I will be showing you later on this. Now, directly moving to the practical session of this Loom. So what you have to do, so let me share my screen. To avail the Loom service, you have to directly go to loom.com. So loom.com, because I am already logged in with my account, I will log out. So this is the interface that you will get while going to this site. Then first thing is you have to sign in. You have to sign up for the Loom, get Loom for free. You can sign up with your Google account, Slack or Apple account, or you can enter your email ID. But since our educational email ID is directly linked with G Suite, so you can click on this sign up with Google. Then you can select your educational email ID. So for example, I have this. So it will ask you to agree to accept the license. I agree. It may take some time. Now, what will you use Loom for? Definitely as a teacher or as a student, I will be using it as a teacher. Continue. You can write the name of your workspace. So for example, MIB workspace. You can write anything, and then you can upload your own logo. So you can later on change this logo, create. You can invite other friends or colleagues or students. So I will skip that. Now you can download a desktop application to use Chrome, use this Loom, or you can install the Chrome extension. So what is a Chrome extension? It is a small program that gets linked with your Chrome browser, and you can directly record your videos by clicking on the extensions that you can search at the right side of your address bar.
So this is the address bar, and on the right hand side you will get different extensions. So since I'm not working in Chrome, so on Chrome you can install this plugin, and then as we saw in case of Screencastify, it will be installed as an extension. But you can also download this app. You will click on download app. I have already installed it on my system, and it is around 72 MBs. So there, once it is downloaded, then you can install this app. Once it is installed, this icon will appear on your desktop, Loom. Now I have to use this. First thing is, since I registered with an educational email ID, so I can check my licensing under the settings, and then plan and billing. Currently, it is showing me that you are on a trial and you have to pay $10 per creator per month. So this is the paid version. But since I have mentioned that while registering, I am going to use this account for educational purposes, it will take few days for them to verify, and after that they will link the free educational plan with your account. So if I log out of this account, and if I log in with my account that has already got this free licensing, so if I go to settings, I can see that my plan is Loom for education. It is free for educational purposes. I can use it free of cost, and my bill per month will be $0. So it is free of cost. I can use this. Now, this is the main interface. You will get your main workspace. You will have some settings on the left-hand side. Personal means all the videos that you have recorded will appear here. You can organize them into different folders. You can create folders and then organize them. One more recent feature that they have added is screenshots. You will be able to capture screenshots using Loom. So for that, you have to click on this Ctrl+Shift+2 on Windows, and while the Loom app is running, and it will directly take the screenshot of your screen. So under the videos, you will get different videos that you can share with others. If I click on this, I can share it with others. I can invite others to edit it. I can duplicate it. I can archive it. I can download it as a video. And there are different options. I can move it between different folders. So these are the options that you get. Then you get this shared one. On left hand side, you will get another tab that is for shared videos. These are the videos that other Loom users have shared with me. So for example, if 2 or 3 faculty members are working on some video project, so they can share the video with one another, and then they can edit that in shared mode. Then there is one more tab that is team. So here you can add different videos to your team. If you have some team and then you want to add some videos to that, and you want to share that video with your team, so this team, they can get all those videos that you want to share with that team. So for example, if I want to move this video to my team, which is which are the students for whom I have granted the access to these videos, I can directly click and drag this into the team, and it will be shifted to the team library. Then there are start videos. If you have start some important videos, you can start them here. So it will be added to the start. And archive, you can archive some videos that you think you are no longer going to edit them, or you are no longer going to use them. You can add them to your archive. And then there are settings related to workspace and personal. So under the workspace, you can name your workspace and upload your own logo for the workspace. So for example, I don't have any logo on this, probably. Yeah, I have the JDC Pulwama logo that I can upload and save. It will be added to my workspace. Then there is billing plan, and then different members that you can add to your team. So you have to invite them.
if they are using Loom, they will be added and you can view them here. And then there are some personal settings. You can change your photograph name. You can link some other video, other sites, Slack or Google to your site, and then you can change your password. And there is one more thing. You can download all the comments you have given to different videos, you have added to different videos. You can download them in a single zip file. Then notifications, different notifications, and integration with other applications. You can integrate this Loom with other applications, and then you can share your videos with these applications. For example, you can link your Google Docs, you can link these different GitHub or Dropbox, so you can use them. Now, the main thing is how to record videos. So once I have downloaded the app, this Loom, I have installed it. Now I will be able to record different kinds of videos. So if I click on this Loom, double click on this Loom, so it will give me this interface. Here, I can either go for video recording or I can go for screenshots. So screenshot is simple. You can use it for that purpose as well. So under the videos, first thing, you have to set up your recording studio. You have to set up your camera. You have to set up your microphone. So here is the camera that is attached with my desktop. And then the microphone that is connected, you can use an external if it is inserted or plugged into your system. Then at the top, you will get some settings. What you want to record? You want to record screen and camera. You want to record screen only, or you want to record camera only. So you will be able to do any of these. So first, let us see screen only. I won't be able to use my video right now because it is currently being used by the Zoom app. So it won't get access for that. It is showing these dots. So it is being used for the Zoom app. So I won't be accessing it. Then it is going to check the internet connection, because after the video is recorded, it will be uploaded to the cloud, Loom cloud, and then you can edit that or download that video. It won't be able to save that video on your local desktop system. So here you will get the setting, what kind of recording you want to do, whether you want to go for some low resolution recording or high resolution recording. So under your plan, you will be able to go for 360, which is a low recording resolution, 480 or 720, which is HD, or 1080 pixel HD. You can go for any kind of recording depending upon your requirements. And now I can go for start recording. Before that, I can set up some preferences. So I can click on these three dots and then go to preferences. Under the preferences, you will again get some options. For example, whether you want to highlight your mouse clicks. So when you are recording, if you click on click anywhere on the desktop, it will highlight that portion. So similarly, whether you want to go for recording countdown, when you will start recording, it will show you a countdown from 3 to 1, whether you want to go for that. Whether you want to flip your camera. So sometimes you require that the camera should be flipped. If you have some text behind you and it is coming as a flipped video, then you can flip that, can flip your camera. Similarly, show control menu during the recording, whether to record audio in mono or studio. If you will uncheck that, it will record in studio mode. And then whether to use the system audio or external mic or something else. These are different options. Then there are shortcuts. These are the important, this is the important menu, because most of the time you will be using, while recording the videos, you will be using these shortcuts. You can set up your own shortcuts so that you can remember them, when to start recording, when to stop recording, or when to pause recording. If you are recording and in between someone comes in or something happens, then you can pause the recording. After that, you can resume that. So for that, you can set up these options. There are some options that are given in, you can change them. For example, for starting recording, it is showing this caret. That caret means control. This
upward arrow means shift and then S. Control Shift S. So on the keyboard, you have to click on Control Shift S. It will start recording first time. If you are recording, then if you will again click on Control Shift S, it will stop recording. Similarly, if you want to pause your video, you can click on Control Shift P, or if you want to then again resume it, then you can click on Control Shift P. You can change these settings. You can click on any of these and then set up your own shortcut. For example, Control Shift and S. So it will set up that. Make sure that you are not setting up some key that conflicts with the Windows keys. There are different Windows keys. It should not conflict with that. So it will create some problems to the application. And similarly, you can set up option or setting for canceling recording, or if you want to take screenshot of some selected area. So for that, it is showing Control Shift and 2. You can change that if you want to set up your own one. If you want to take full screenshot, you can click on this Control Shift 1. If you want to restart, and then there is a drawing app in between. If you want to show some drawings, for example, you want to show some arrows, or you want to show some circles, or you want to highlight some portion on your screen. For that, you have to click on Control Shift Control Shift and D. It will show the drawing menu, and you can use that. Then there is the account one. Once you are satisfied with your options, you can click on Start Recording, or you can click on your shortcut Control Shift. And on the lower left hand side, you will get the preview of video. If you have selected for screen with camera, you will be able to view your camera. And then there are different options for this camera. You can change the size of this camera. You can decrease its size, increase its size, or you can double click on it. It will go for full screen video recording. Or again, double click, it will shrink. So then there is the option. You can switch between your camera and your video and your image thumbnail that is connected with your Gmail account. So I can click on this. It will show my thumbnail. Now no video will be connected. It will only show my image. Similarly, you can add some frames to this if you like. So you can click on this. This is the new option. For example, currently winter is going on in Kashmir. You can click on this and it will show this winter-like image around or border around your image. So you can go for this one. There are a few options. They have added this new feature. Now, once you are satisfied with all options, then what you can do, you can click on Start Recording. So it will give me this timer. And after that, now it is recording. On the left hand side, you can see this menu, small options. The red button, it is to stop it, or you can restart this video recording. If you have started recording and in between you feel that you have done something wrong, then you can restart your recording. You just simply have to click on this and it will delete the previous recording and it will start the recording fresh. And then you can pause that, you can delete this recording, or you can click on this draw. So what is draw? Draw means if you want to show, highlight, or show some, mark some portions of your screen. For that, you can click on this draw, and then there will be different options. So we can go to this draw option using the shortcut Control Shift D. It will again go to the same. In between, if you have some presentation that is going on and you want to highlight some portion, then you can click on Control Shift D, and then you can highlight that portion. Or you can click on tip, whatever color you choose, you can go for that. Now it is recording my screen. Whatever I am doing on this screen, it is recording that. For example, if I want to record my presentation, this is my presentation. So I want to go to the full mode. It is recording this presentation. I am going for the recording. And in between, I can click on Control Shift D if I want to highlight some portions. Then I will again Control Shift D and it will be deselected, and then go to the next slide, next, and then you can go on dictating. Once you are satisfied, once you are finished with your recording, then you can click on the shortcut Control Shift S that I have set up, or you can click on this one.
to stop recording. So I will click on this. It will stop recording, and now it will upload my recording on the Loom cloud. It won't be saved on the local system. It will directly be uploaded to the cloud, and now it has been uploaded to the cloud. If you are satisfied that you do not require any kind of modification or editing to this video, then you can directly share this to the public. If I click on this, copy public link, then since this is a cloud app and the video is now available on the website, you can share this video with your colleagues. You can click on this public video, and everyone with this link will be able to view this video. Similarly, you can share it with some specific email IDs, or you can play it. You can check how the video is going on. This is the video that I have recorded. So in between, if you want to go for some editing, for example, you want to select only few portions of this video, you can crop it online. So there are options to trim video. You can trim it online. So for that, what you have to do, directly click on this trim video. It will open the video in editing mode. Now this is in editing mode. What you can do, you can click on this start trimming. You can trim any portion. So for example, if while playing this video, I feel that here I have to stop, I have to delete these few seconds. You can click on start trim and then select the portion that you want to trim, that you want to delete from your video. So I want to delete these few seconds. Again, now I am playing this video. Now, once you have selected the portion, you have to click on this remove. At the right bottom corner, you will get remove, or you can cancel that selection. Now, this marked portion will be removed once I click on this publish changes. It will be removed from my video. Similarly, when you are playing it, in between you feel that you want to remove some more portions, you can click on start trimming. Now I want to trim this portion as well. So these two red marked portions will be deleted from my video. So first you have to play your video, then you can go for editing. You can remove the unwanted portions. Once you are satisfied, then you can click on this publish changes, or you can click on this undo if you do not want to delete any portion. So I will click on publish changes. Now it will start editing this video. It will trim those two portions from the video, and then once it is finished, it will show you the edited video. So 0 meaning. Now it has finished, and you can check your video now. So now it is playing the edited one. The portions that I have trimmed from this video, they have been removed, and the video has been edited online, and now you can check it. This is a beautiful application. If you want to only trim some portions of your video, for that you can use this trim option. Then there is one more option. You can add call to action. This is another feature. Call to action is when this video playing is finished, then the users will be shown a button, and on that button you can link some URL. For example, you can write a video. You can add a button, more details, and enter the URL where the more details regarding this video are present. You can mention the URL, YouTube URL, or some other one.
So for example, youtube.com simply. You can change the color of this button. So I want to have this green one, and then save call to action. So once you will play this video, at the end, users will be prompted with this more details. If they click on it, they will be redirected to the URL you have entered. So this is the simple interface. Now you can click on your personal tab and you will get this video under your personal tab. This is the video 7 minutes ago, meeting controls. Now you can share that, you can add that to a folder if you want to create your own folder. BC second semester. Can it be downloaded? Yeah, you can download that. You can click on it, these 3 dots, and download. The video will be downloaded in MP4 format, then you can edit that using the offline application. So this is the simple interface of the Loom. Now you can apply for your educational license, register with the Loom, and then they will automatically link the educational license with your account, but make sure that you are registering with your educational email ID, that ndsv.edu.in. So in between, within a week, if you feel that they have not activated the educational license, then you can write to them. There are some options for, there are some email IDs. You can click on those and you can send them an email mentioning that I have my educational license has not been activated, so kindly activate it, and you can further prove your you can prove that you are working in some educational institute. So for that, you can send them the link of your profile on the website or some other proof, so that they will activate that license. 1 minute. So this was regarding the Loom app. Now let us move to some other app. Next topic is regarding video editing. So now you have already seen some video editing features, how to edit. The main one of the fundamental video editing feature is to trim some portions of your video. So if you have some unwanted portions, you can trim those portions. But video editing includes much more than that. For that, you can go for different software, paid as well as open, free and open source. One that I will be showing here is OpenShot editor. So you can download that OpenShot editor. So this is the website of OpenShot video editor, openshot.org. This software is free to use. You can use it free of cost. It is cross-platform software. That means it works on Mac, Linux, as well as Windows. So you can use this software free of cost. Click on this OpenShot. This is the main website of OpenShot video software. And on the front page, you will get the link to download the latest version for different platforms. Or
You can click on this download link to see different versions of the OpenShot. This is the 64-bit installer for Windows machine. This works on Windows 7, 8, and 10 plus. And if you have a 32-bit machine that I have shown on the first day, then you can click on this link, which is below this download 2.5, and it will give you option to download the 32-bit. I will cancel this download. So there are two kinds of machines, operating systems and machines. One that is 64-bit. That means it is running the 64-bit operating system. So I have already shown you how to check whether your operating system is 32-bit or 64-bit. So I will quickly show you again. So you can click on this PC and then properties. You will get this system properties page, and here you can check whether system type is 64-bit or it is 32-bit. So if it is a 64-bit operating system, you can click on, you can download the 64-bit version, or if it is a 32-bit machine, x86, for 32-bit machine, there will be x86 written instead of this x64. So you have to download the version accordingly as per your version, as per your machine type. So you will click on this download version 2.5.1. So if you are working on Mac, then you can click on this tab to download the software for Mac operating system. And if you are working on Linux, then you can click on this. And if you have some Chrome book, so you can click on this Chrome operating system downloads. So it is a cross-platform software. It is available for all the platforms. So I can click on this download, and it will start downloading this software. I will cancel because I have already downloaded and installed this software. Then you can double click on this installation file to install this software. Once this software is installed, you will get this icon, OpenShot. Now I will double click on this OpenShot video editor. This is only a video editor. It cannot be used to record the screen. So it is not used to record the screencasting software. It is just a video editing software. So you will get this basic interface of the video editor. So this is an interface that is similar with most of the video editing software. You will get the menu, which you get on all the applications. Then there will be some shortcuts. Then you will get some pans. One pan will be to add different kinds of media and transitions. So first, if you have to edit some video, you need to import that video to your project. So you have to double click on this, or you have to click on this project files, or you have to click on this plus to import files, this green plus. This plus is to create a new project. So you have to click on this. It will show you a dialog box to import different video chunks that you want to edit. Then there will be one portion, one screen, one pan that shows the preview of your video. And at the bottom, you will get these tracks. And on the OpenShot, you will get 5 tracks. By default, you can add as many. These tracks are used to add the video, audio content, or graphical content to your video that you want to create. So if you have created 5 minutes videos, 2-4 videos, and you want to combine those videos, then you have to import those videos to your project, and then you have to add them to your timeline. This is the timeline. This will show you how your output video will appear. It will have different media. It can have an audio media only, or a video media, or a mixture, or a graphical image, or some textual images, or some animations. You have to combine all those items into your timeline as per your requirement, and then you can export that video into the desired output video. So this is the simple interface for all the video editors. Now, let me show you how to use this OpenShot video editor. The first thing is you can create a new project. You have to name your project so that all your files that you have imported, or if some video project is taking you more than 1 day or 2 days or some time, then first of all, you need to save your previous settings. For that,
you can create a new project, or you can open a previous project. So I will create a new project. I will save this project. Since I have not added any video or some graphic element to this project, this save option is disabled. Now, next thing is you have to add the media that you want to edit to your project. So this pan is for that purpose. So you can either right click on this screen to import files, or you can click on this option, this plus option, to import files. So I will click on this, it will show me this dialog box. And now I will be able to add different video content or images or MP3 files or animations to my project. So for example, we have downloaded a video recently, this one that we screencasted, and we want to edit that. I will open it. So it will be shown here. Now you can filter out the kind of media that is available on your this pan. So you can only show video content, video files, or if there are some audio files, you can click on this, it will show only the audio files. Or if there are some images that you have added, for example, I want to add some images as well. So let us add this image. Now I can click on this, it will show me only the images that are present in my project or that I have imported into my project. So show all will show all kinds of media. And this is the way how to import different kinds of media that you want to edit into your project. Next thing is you have to add these different kinds of media into the timeline. So timeline will show you the order in which these media contents will appear, and then there are different layers. These media contents will be one after another. So those media contents that are at the top will appear at the top in the video preview, and those that are at the bottom will appear at the bottom. So for example, I want to edit this video. I will simply click and drag it to some track. You can randomly add it to any track. There is no restriction which track is for which kind of media. Now this video has been added to my timeline. It is showing me that this video is of about 1 minute and some 20 seconds. So you can preview it. You can check this video by clicking on the spacebar. So this cursor shows the currently playing frame of the video. So you can click on spacebar and you will start playing this video. Now you have to add different media. Now before this video will start, you want to add this image, or you want to add this image at the top of this video in between somewhere. So you have to import this video to some layer, so to some track. So there are currently 5 tracks. You can add more tracks by clicking on this add track. You can rename these tracks. You can remove this track. You can move this track above or below. So for example, I can rename this one. So if you want to increase the space of your timeline, you can click on these few dots and a double arrow will appear, and then click and drag. Now you will get more space for the timeline, and this pan and this pan will be shrinked. So this track is for the main video. So I can rename it and name it as main video track. So this is the main video track where you have added the main video that you want to edit. Then I want to insert or import this image into my track. I can add this image anywhere on any track. But if I add this image at track 5, which is above track, this one, main video track, this image will appear when it is played at this position. And the video will be at the back side. It will be behind this image. It is a layered one, so it will be behind this image. Now you can adjust this image if you want to, if you want that this image should appear in the corner somewhere on top of this video. These are layers.
on which you have to add different kinds of media, that media which you want to incorporate into your video. Then you have to edit this video and then include these different kinds of images on top of it or below that. You can even extract the audio from this video if you want to include your own audio somewhere. So you can do that. That is called a video editing. So on all the video editors, you will get this track pan where you can add the tracks, different tracks, and you can add different kinds of media to these tracks. And there are some tools to edit these media items using these tools. For example, we have some options. I can cut this video. This is a single video. I can cut it into two slices. So for that, I can use this scissor type icon. So I can click on it, and then wherever I want to divide this video or cut this video, I can simply click. This video will be divided into two videos. So that is called video editing. And can we put images or animation between these two? Yes, you can. You have to cut the video at that point and then add the image. For example, I want to cut this track only or on the above or below tracks? You have to first of all create a space for your media. For example, I am playing this video. And now at this position, I want that an image should be shown to the participants or the users. So what you can do, you can divide this video. So I will click on this icon and then click on this. So now it has divided this video. These are now two portions. And if I put some space in between two media, this video clip and this video clip, it will start playing, but it will show a blank screen at that point. Now I have created a space between these two videos. In this space, I can put any kind of media, whether image or a video or some sound or some animation. You can put any kind of media between these two clips. So you have to create the space and then you have to adjust your media accordingly. For example, I want to show this image at this portion. Now let us see how it is going to play. So at this point, I have created a space and it is showing the media that I want to show. You can incorporate or include or embed different kinds of media into your video. If we keep that image on track 3. If I will keep this image on track 3, since above it there is no video clip at this portion, so it will again be shown. If we have two images or two things on above and below track, so it will show the above one that will be at the top. That image will be shown. The image that will be at the top. For example, I can add this image once more. So it is now present at the top as well as at the bottom. So this top one will be shown. Let us add some different image. That is an exe file. So for example, this day 4. I can edit at this position. Now, while running this video, the above one will be shown, not the bottom image. It is showing the day 4 one. So this is how you have to arrange different items. You can add an audio file if you have some MP3 file. You can add that, and that will be shown at the bottom. I will show you how. So first, so this is regarding the timeline. So what is a timeline? A timeline is a set of tracks on which we add different kinds of media that we want to include in our video, and those media will be shown as per their position in the track. So it will be shown in the final output video as the way we have arranged them on this track. So these tracks, you can add as many tracks as you like. So mostly we go for 3, 4 tracks or 5 tracks as per your need, but you can go for any kind of tracks. So now, how to edit now videos? First, I have edited some video. There are some options to edit these videos. You can delete this video. If I select some portion,
it will be highlighted in red. Then I can click on delete and it will be deleted. So for example, I want to trim some portions in this video. So I will start playing this video. I want to trim this one, this end circle. So it is starting from this position. So I will click on this scissor icon and then click at the position where I want to cut this video. Now it has been cut into two. Again, I will go on playing this video to the position until I want to delete this portion. Again, I will click on this scissor and click on cut. Now I have identified this portion that I want to trim out of my video. Now I can now highlight it and click on delete. It will be deleted from your video. And now I can push this video backwards. So this portion of the video has been removed. This is how you can trim using this. There will be different icons for how to cut this video, but the functionality is same. You have to select the portion and then click on this scissor, or if you are working on Camtasia or some other, then there you simply have to take this cursor at the position where you want to cut the video, and then you will get a bar and you will click on that. It will cut the video into two sections. So this is the first option. Then this snapping enabler, this magnet-like icon, it shows when you add different videos and then you join them with one another. As I take it close to the next one, it gets attached to it. See, as if a magnet is connecting these two video clips. This is because I have enabled this magnetic snapping I have enabled. But if I disable this, then you can see it is not connecting with it. I can put it, I can place it at any portion. So for that, you have to enable the snapping so that whenever you join two video clips on a track, they get attracted or they get connected at the proper position. There is no space left in between. 1 minute, let me pick up the phone first. So this is how you can remove different portions of your video. First, you have to identify that portion, and then you have to accordingly use these tools to cut that portion or delete that portion or remove that portion. So this is the first option, how you can edit your video. Next, you have to add different transitions or effects to your video. Now you want to add different transitions or effects to your video. You will get a number of transition effects. So here are some of the effects. On the tab that is next to the project files, it is showing you different effects that you can click and drag in between two video clips or on any video clip on which you want to put this effect. So this effect is circle in to out. So if I click and drag it and put it on this video, now I can run it. Now you will see some kind of effect that has been applied to your video. You can increase or decrease the length of this effect by clicking on these boundary markers and then click and drag.
And then let us see again. So you get this diminishing effect. This way you can add any kind of effect. For example, when you start a video, we get a fade in or fade out effect. So for that, you can drag this fade in effect and then cut it short. So it is getting some fade in effect. There
So we are sorry that due to electricity cut, we could not continue it. So there was some power failure. So I will be once again opening the OpenShot video editor. In between, if you have some question, you can unmute yourself and then ask the question till I will resume the OpenShot video editor. अगर किसी को इन बिटवीन क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करे और वो क्वेश्चन वो पूछ सकता है. So we were talking about this OpenShot. तो OpenShot में what we do, तो इसमें हम different videos को edit कैसे करते हैं. तो I was showing you कि effects कैसे इसमें ऐड करेंगे. Different kinds of effects. Effects का मतलब है कि अगर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, इसमें different portions है और आप स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन सीन टू अनदर, यू कैन ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स, स्क्रीन स्वैपिंग इफेक्ट्स और डिमिनिशिंग इफेक्ट्स और सम मोर इफेक्ट्स. So for that you have to go to these transitions and then there are different effects that you can different transition effects that you can add to your video clip. अब याद रखना है जहां पे भी आपको इफेक्ट ऐड करना है, you have to cut the video at that position. मसलन फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं यहां तक, तो यहां पे मैं एक इफेक्ट ऐड करना चाहता हूं. आई वांट टू ऐड द इफेक्ट हियर. सो यू कैन नॉट ऐड द इफेक्ट इन बिटवीन. सो इट विल बी एडेड बिटवीन टू वीडियो क्लिप्स, नॉट विद इन द वीडियो क्लिप. तो ये इफेक्ट अगर आप ये ट्रांजिशन डालना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको पहले कट करना पड़ेगा इस वीडियो को. तो आई विल क्लिक ऑन दिस सीजर और यहाँ पे मैं इसको पहले क्लिक करके कट कर दूंगा. नाउ इसको मैंने दो पोर्शंस में कट कर दिया. नाउ आई कैन ऐड वन ऑफ द ट्रांजिशन. सो फॉर एग्जांपल दिस ripple effect. I can click and drag and then drop it between these two layers. अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो दिखा रहा है these are the boundaries. अब ये बहुत पोर्शन पे इफेक्ट कर रहा है, then you can cut it short. इस इफेक्ट को आप कम कर सकते हो. तो मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसके कॉर्नर पे जाऊंगा, छोटा करूंगा इसको. दो इफेक्ट ऐड हुए तो ये इतना इफेक्ट स्टार्ट यहां से होगा. तो ये चल रहा है वीडियो. अब यहां से इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है. अब कहां तक ये जाएगा? यहां तक, जहां तक साइज है. अगर आपको लगता है ज्यादा पोर्शन पे है आप इसको कम कर सकते हो. अगर आप टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन आती है, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट इज टाइम ड्यूरेशन. जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे दिखा रहा है एट द राइट हैंड साइड 15 सेकंड्स का गैप है बिटवीन टू स्केल्स. जो स्केल के ये डिफरेंट पोजीशंस है, इनके दरमियान 15 सेकंड्स का गैप है. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज दैट. अगर मैं राइट साइड कर दूं, अगर आपकी वीडियो बहुत बड़ी है तो आप इस पे क्लिक कीजिए और आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं. लेकिन अगर आपकी वीडियो छोटी है या आप जूम इन करना चाहते हो, दिस इज जस्ट लाइक द जूम इन और जूम आउट. तो आप मेरी जो ये छोटी वीडियो क्लिप है बहुत बड़ी दिखाई दी. नाउ आई कैन सी दिस इफेक्ट. आई कैन फर्दर डिक्रीज इट. इतना ही मुझे चाहिए, कुछ सेकंड का. अगर वीडियो में ऑडियो है तो हम क्लिप करते हैं वीडियो को, तो उस क्लिप पे उस आवाज क्या होगी? जैसे मैं कोई आवाज चल रही है, आवाज के इफेक्ट डिफरेंट आती है. जो ऑडियो इफेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. अगर आपने वीडियो इफेक्ट को डाल दिया, दैट वोंट इफेक्ट योर ऑडियो. ऑडियो चल रहा है वैसा ही. लेकिन अगर आपने ऑडियो की इफेक्ट डिफरेंट आती है इसमें, जैसे उसका साउंड आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, कहीं पे उसको म्यूट कर सकते हो, तो वो डिफरेंट है. वो इफेक्ट्स में दिखाऊंगा बाद. तो यहाँ पे आप, ये मैंने छोटा इफेक्ट कर दिया, आप इतने ही पोर्शन पे ये रहेगा. ठीक है. आप इस पोर्शन पे अगर आप कोई और वीडियो क्लिप डालना चाहते हो या कोई इमेज डालना चाहते हो या कोई इफेक्ट डालना चाहते हो, वो आप शो कर सकते हो यहाँ पे. सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स जो फ्री आपको मिल रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हो. देखिए बहुत सारे जो प्रोफेशनल और पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं. प्रोफेशनल इफेक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं
क्योंकि वो उनको हम पे करते हैं तो उससे ज्यादा। दिस इज अ फ्री वन, तो फ्री में जितना मिल रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है आपके एजुकेशनल कंटेंट के लिए, जो आप वीडियो ई कंटेंट बनाना चाहते हो उसके लिए ये डिफरेंट बहुत ज्यादा है। तो अब नाउ देयर आर सम इफेक्ट्स, मोर इफेक्ट्स यहाँ पे है। ये तो ट्रांजिशन है सीन्स, आप किसी जो ट्रांजिशन है, दो ट्रांजिशन आर बिटवीन टू वीडियो क्लिप्स। आप एक वीडियो क्लिप से दूसरे में जा रहे हो, ये ट्रांजिशन इफेक्ट देना चाहते हो। देन विद इन ए वीडियो क्लिप, अगर आप किसी वीडियो क्लिप को मॉडिफाई करना चाहते हो, उस पर कुछ इफेक्ट्स डालना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। जैसे बार्स डालना चाहते हो, मैं इस पर क्लिक करके इस पे ड्रैग कर दूंगा, अब इसमें कुछ बार्स आ जाएगी, अब वो दिखाई नहीं दे रही है। ब्लर कर सकते हो, जैसे इसको हम ब्लर करते हैं, छोटी सी एक वीडियो क्लिप लेते हैं, इसको यहाँ पे कट करते हैं। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जब आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हो तो वो चल रहा होता है, और उसको अनसिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू वंस अगेन क्लिक ऑन दैट। अदरवाइज मैंने रेजर टूल को लिया, अभी ये फिर भी रेजर ही दिखा रहा है, ठीक है, सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है। देन यू हैव टू क्लिक इट वंस मोर, तो अब आप सिलेक्शन मोड में आ गए। तो जैसे यहाँ पे कोई नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं इस पे, ये तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हो गया? हाँ हो गया। नेगेटिव बन गया ना इसका। तो ये इस क्लिप में देखो, यहाँ पे नेगेटिव टाइप का फोटो आ रहा है। तो ये डिफरेंट कुछ इफेक्ट्स है जो आप डाल दोगे तो विद इन जो एक क्लिप है उस पे अप्लाई हो जाएंगे। और इफ यू वांट टू पुट द इफेक्ट्स व्हेन यू ट्रांजिट फ्रॉम वन वीडियो क्लिप टू अनदर, तो उसके लिए आप ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स डिफरेंट डाल सकते हो। तो ये आप यहाँ पे भी डायरेक्टली डाल सकते हो किसी भी वीडियो क्लिप पे। उस वीडियो क्लिप क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। वेदर यू वांट टू रिमूव दिस क्लिप, यू वांट टू कॉपी इट, कॉपी का मतलब है इसी क्लिप को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, कॉपी कीजिए और कहीं और जगह पे पेस्ट कर दीजिए। तो इस यू वांट टू फेड इन और फेड आउट, जब ये वीडियो स्टार्ट हो जाए, इसके स्टार्ट में भी थोड़ा सा वो डिमिनिशिंग टाइप, ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और फिर फुल वीडियो क्लिप, और जब ये क्लोज हो जाए उस वक्त पे। तो मैं फेड पे जाऊंगा, स्टार्ट में डालना है, एंड में डालना है, कि दोनों साइड से डालना है, फेड इन एंड फेड आउट, स्लो डाल देंगे। अब जब हम इस वीडियो क्लिप को रन करेंगे तो ये फेड इन आ रहा है, उसके बाद वीडियो फुल चल रही है फुल ब्राइटनेस के साथ। जब एंड पे जाएंगे तो फेड आउट इफेक्ट आ जाएगा, ये ब्लैक टाइप का जा रहा है। इसी तरह आप राइट क्लिक करके इसमें एनिमेट कर सकते हो इसको, इस क्लिप को स्टार्ट में करना है, लास्ट में करना है। जैसे एनिमेशन का मतलब है, ये वीडियो क्लिप जब आएगी तो जूम करके आएगी, छोटी छोटी बड़ी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी, फिर बड़ी हो जाएगी। तो कितना जूम करना है, 50 to 100%, 75 to 100, जैसे 50 to 100 करते हैं। अब इस वीडियो को चलाते हैं, अब देखिए ये छोटा है, अब बड़ा 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 होके फुल स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। अब ये कुछ पोर्शंस को डालना पड़ता है, ये इफेक्ट अगर किसी एक कहीं पे इमेज डालनी है, वो बड़ी करके दिखानी है, तो उसी इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसी पे इफेक्ट ऐड कीजिए। तो इसी तरह यू कैन ऐड रोटेशन इफेक्ट, अगर आप इस वीडियो को रोटेट करना चाहते हो, किस डायरेक्शन से रोटेट करना है, 90%, तो ये रोटेटेड आ जाएगा। देन देयर आर लेआउट इफेक्ट्स, इसको कहाँ पे रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में, टॉप पे रखना है, ठीक। या आप इस वीडियो क्लिप को कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हो। देन यू कैन राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म अब जब डाल दिया तो आपको ये आइकन्स आ जाएंगे। अब इसको आप पोजीशन कर सकते हो कहाँ पे रखना है, अगर आपके पास इमेज है उसको रख सकते हो, अगर आपके पास डिफरेंट वीडियो क्लिप्स है तो इसको यहाँ पे रखो, इसके ऊपर एक और वीडियो क्लिप है उसको यहाँ पे रखो। जैसे इस वीडियो क्लिप को यहाँ लाते, ये इसके ऊपर है, अब मैं इसको भी ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा, एक साथ दोनों चल, ये दोनों एक साथ चलेगी यहाँ पे। अब देखिए दोनों आ रही है। तो जिस किस्म का इफेक्ट आपको डालना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, नीड क्या है, जैसा आप एडिटिंग करना चाहते हो। मोस्टली जब वीडियो आप बनाते हो तो उसमें कुछ पोर्शंस को काट करना है, या इन बिटवीन कहीं पे अपना नाम डाल देना है, जो नाम आता है कहीं पे, वॉइस ओवर कहीं पे डालना है। तो इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट्स और क्या है इसमें, आप इसका वॉल्यूम
इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर इसको करना है तो डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, पूरी एंटायर क्लिप पे कर सकते हो। जैसे मैं इसको म्यूट करना चाहता हूं तो लेवल 0, इस पे ऑडियो नहीं चलेगा। अगर लेवल 7 कितना करना है, फेड इन करना है, जैसे ये वीडियो क्लिप जब चलेगी तो स्टार्ट में स्लो साउंड आएगी, फिर थोड़ा बड़ा 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 तो फिर फुल चलेगी, तो दैट इज कॉल्ड फेड इन एंड फेड आउट फॉर द वीडियो ऑडियो। तो ऑडियो के लिए भी ये कर सकते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। ठीक, इसी तरह अगर आप वीडियो क्लिप से ऑडियो को सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है, जैसे आप जब इस पे डिफरेंट एडिटिंग करते हो तो ऑडियो नीचे ही रहना चाहिए, ऑडियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फॉर दैट यू कैन सेपरेट द वीडियो। जैसे मैं इस वीडियो को फिर से, जो फुल क्लिप हमारी थी, ये मैं वापस लाता हूं यहाँ पे, और जो बाकी है यू कैन सिलेक्ट एंड ड्रैग। ठीक है, ड्रैग एंड सिलेक्ट, और फिर डिलीट कर दिया, ये सारी डिलीट हो जाएगी, एक ही रह गई हमारी। अब इसमें मैं ऑडियो को सेपरेट करना चाहता हूं। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑडियो है और ये वीडियो है। ठीक है, अब दोनों में से आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं तो पहला वाला पोर्शन जो है वो म्यूट हो जाएगा, इसमें अब ऑडियो नहीं चलेगा क्योंकि मैंने रखा ही नहीं है नीचे, तो ऑडियो खाली इस वाले पोर्शन में। या अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तब अब जाके ऑडियो चलेगा। इस ऑडियो पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स खुद डाल सकते हो, इसमें अपने ऑडियो के इफेक्ट्स आते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हो, इसको साइलेंट कहीं पे कर सकते हो, जो आपको करना होगा, कहीं पे इंक्रीज करना है ऑडियो, जो भी आपको करना होगा एज पर यूर नीड। अब जब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो ये यहाँ पे एक बार दिखा रहा है, इसका मतलब ये पूरा इसकी लाइन पे आ रहा है, तो इसके साथ मैच सिंक हो रहा है। तो ये मेरी ऑडियो फाइल है, अब मेरी वीडियो फाइल डिफरेंट है, ऑडियो फाइल डिफरेंट है। या अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे वॉइस ओवर डालना है तो मैं ये ऑडियो डिलीट कर दूंगा और कहीं और पे रिकॉर्ड कर दूंगा इसको, जो ऑडियो मैंने रखा होगा वो इसमें डालना चाहता हूँ। या इसी ऑडियो को, इसका जो ऑडियो है, देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशन जिनके जरिए इस ऑडियो को आप मॉडिफाई करना चाहते हो। जैसे ऑडेसिटी है, ऑडेसिटी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिफरेंट इफेक्ट्स डालते हो, इस ऑडियो साउंड इंक्रीज करते हो, डिफरेंट इफेक्ट्स प्रोफेशनल टाइप बनाते हो उसको। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें से ऑडियो को डिलीट कर दिया, ये वीडियो जो है किसी ऐप में डाल दिया जहां से सिर्फ ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, उस ऑडियो को सेव कर दो MP3 में, फिर उस पर अप्लाई डिफरेंट इफेक्ट्स कर दो, फिर वापस उसको यहाँ पे इंपोर्ट करके डाल दो, तो ये वाला ऑडियो जो आप डालोगे वही चलेगा इसमें। तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। सो दीज आर द ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस जहां से आप इसमें डिफरेंट इफेक्ट्स। देन देयर आर ऑप्शंस here at the top, you can add a title। तो आपको कुछ फ्रेम्स मिल जाएंगे, टाइटल के फ्रेम्स, जैसे बार टाइप का है, जैसे नीचे आप वीडियो चला रहे हो नीचे नाम आ रहा है आपका, तो वैसा टाइप टाइटल है। या स्टार्ट जब कर रहे हो तो एक स्क्रीन आता है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है इस वीडियो की कि ये किसने क्रिएट किया, कौन है, तो उसके लिए डिफरेंट कुछ आपको इंटरफेसेस मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट में हम डालना चाहते हैं, देन यू कैन एडिट दैट। फाइल नेम क्या रखना है, पहली लाइन टेक्स्ट क्या आएगी, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट लाइन, अगर नहीं रखनी है तो डिलीट कर दो इसको, इसमें कुछ मत रखो। सो दिस इज ए डेमो टेक्स्ट। तो इसी तरह यहाँ पे किसने, रिकॉर्डेड बाय, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, नीचे रखना है, वेबसाइट अपनी रखनी है, जैसे हम GDC पुलवामा .edu.in रख सकते हो। यहाँ पे अपनी YouTube चैनल दे सकते हैं या अपना Facebook अकाउंट दे सकते हैं। हाँ, वो भी डाल सकते हो। आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज जिसका भी डालना होगा। ठीक है, जो टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हो, या एडवांस्ड एडिटर आपको मिल जाएगा, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है अलग से। मैंने जब सेव किया ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो ये स्क्रीन एक बन गया। अब मैं इसको कहीं पे भी डाल सकता हूँ, तो मैं इसके लिए पहले स्पेस बनाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा खिसकाता हूँ और इसको इस लाइन पे दूसरी ट्रैक पे यहाँ पे लाता हूँ, स्टार्ट में लाता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इतना ही आए। अब इस वीडियो को चलाते हैं, हमारे पास तो ट्रैक इससे बड़ा भी था, इसको छोटा करते हैं। अब देखो जब वीडियो चलेगा पहले ये वाला स्क्रीन आएगा, ठीक है, उसके बाद अब अपना वीडियो चलेगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, इस
टेक्स्ट को भी आप डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखे, इन दोनों के दरमियान डाल सकते हो। इसी तरह इसकी इफेक्ट्स डाल सकते हो इसमें कोई भी, या जूम इन जूम आउट का इफेक्ट डाल सकते हो, लेआउट का। जो इसका वेव फॉर्म में देख सकते, रोटेट करेंगे इसको, जैसे चल रहा है। तो आप इस पे डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे भी आपको दिखाना होगा आप दिखा सकते हो, यू कैन एडिट इट, आपकी मर्जी है। इसी तरह देन सर तो देर इज वन मोर ऑप्शन, दैट इज एनिमेटेड टाइटल। ये तो सिंपल आ रहा है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं आ रही। इसमें एक ऑप्शन भी है, यू कैन ऐड एनिमेटेड टाइटल। एनिमेटेड टाइटल क्या है, इसमें कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ये थोड़ा सा टिल्टेड आपको दिखाई देगा इसमें जो टेक्स्ट होगा, कुछ ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है। लेकिन इस चीज को ऐड करने के लिए यू हैव टू ऐड वन मोर सॉफ्टवेयर टू योर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडर। तो ब्लेंडर क्या है, पहले मैं वो दिखाता हूँ, उसके बाद ये इफेक्ट्स में आपको दिखाता हूँ। तो ब्लेंडर एक सॉफ्टवेयर है, blender.org पे। ये 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने के काम आता है। 3D ग्राफिक्स जो हम बनाते हैं उसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर है। तो डिफरेंट ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो इसका इस्तेमाल करती है इस ब्लेंडर का। जैसे यहाँ पे अगर मैं इफेक्ट डालना चाहता हूँ, ये इफेक्ट टाइटल थोड़ा सा टिल्टेड आए इस किस्म का, या इसमें कुछ जो टेक्स्ट है वो फिर डिस्पर्स हो जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, तो इसमें एनिमेशन की जरूरत है। तो एनिमेशन के इफेक्ट्स डालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड दिस सॉफ्टवेयर। इसकी कोडिंग जो है वो ये ब्लेंडर देता है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है, जो लेटेस्ट वर्जन है 2.9 है, डाउनलोड कर दिया, उसके बाद इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में ये आइकन आ जाएगा ब्लेंडर। खाली आपको इंस्टॉल करना है, आपको फिर बाकी ब्लेंडर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉल कर दिया, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे है, ये फाइल ये दिखा रहा है, इट इज इन सी, प्रोग्राम फाइल इज ब्लेंडर फाउंडेशन एंड ब्लेंडर 2.9। तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, इसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, ब्लेंडर फाउंडेशन ब्लेंडर 2.9, ये इसकी फाइल की लोकेशन है, ये है ब्लेंडर। ये लोकेशन मुझे जरूरत है, इस पे क्लिक कर दो और कॉपी कर दो, ये मुझे जरूरत है। कहां पे मुझे देनी है, इस ओपन शॉट को मुझे देनी है कि ब्लेंडर कहां पे इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि ये उस सॉफ्टवेयर के जरिए से ये एनिमेशन इसमें डाल पाए। तो ये कहां पे जाना है, आपको यहाँ पे एडिट पे जाना है, देन देयर आर प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब प्रेफरेंसेस में यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगी ब्लेंडर कमांड पाथ, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली ये, या ब्राउज कर दो और इसी पाथ पे जाओ, सी प्रोग्राम फाइल इज ब्लेंडर फाउंडेशन, ये और इस फोल्डर का पाथ दे दो, तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा हाँ कि ब्लेंडर है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह जब मैंने भी आपको टाइटल दिखाया था, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंक स्पेस आता है, इंकस्केप, ये आपको इंस्टॉल करना है, इसके जरिए से आप एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटिंग इसमें कर सकते हो। तो फिलहाल ये वाला मैंने डाल दिया, इसकी पाथ मैंने डाल दी। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऐड दिस एनिमेटेड टाइटल। तो जैसे ये एक्सप्लोर वाला मैं डालता हूं, तो मैं इसमें टाइटल क्या डालना चाहता हूं, आ गया, ये भी लोड नहीं हुआ, अभी लोड हो रहा है, हाँ आ गया। जेडीसी पुलवामा। इसके बाद इसमें बाकी जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कलर कैसा होना चाहिए, मैं डिफॉल्ट सारा लेता हूँ इस वक्त, और इसको क्लिक करके रेंडर कहता हूँ। अब ये जब रेंडर करेगा, इसकी एक एनिमेटेड फाइल बनाएगा, एनिमेटेड वीडियो बनाएगा, वो वीडियो मुझे यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोजेक्ट्स। अब उसके लिए जो ये सॉफ्टवेयर यूज करा है दैट इज ब्लेंडर, इसको इसीलिए मुझे ब्लेंडर की पाथ देनी पड़ी। तो ये कर रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है 150 है टोटल फ्रेम्स इसमें, तो 8 9 इट विल टेक सम टाइम। जब तक ये काम करता है तब तक हम ब्रेक लेते हैं। इसको थोड़ा पास करता हूं मैं यहाँ पे।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है इन बिटवीन। इन बिटवीन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, अपने आप को अनम्यूट कर दो, देन यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एक वीडियो क्लिप यहाँ पे आ जाएगी। ये आप वीडियो क्लिप आप कहीं पे भी डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ ऊपर एक इसके ऊपर एक ट्रैक ऐड करता हूँ और इस वीडियो क्लिप को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को आप देखिए, ये एनिमेटेड टेक्स्ट है जो मैंने ऐड किया। अब एक बात याद रखो कि ये जो यहाँ पे प्रीव्यू होता है इसमें थोड़ा सा स्लो आपको दिखेगा, लेकिन एक्चुअल जब आप इसको रेंडर करोगे फिर इतनी स्लोनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे एडिट भी कर रहा है और फिर प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इसमें थोड़ी सी डिले होती है। तो ये मेरा वीडियो आ गया, ये टेक्स्ट आ गया। अब इस टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी डाल सकता हूँ, इस वीडियो के ऊपर या इन बिटवीन कहीं पे डाल सकता हूँ, बीच में डाल सकता हूँ। तो आई कैन ऐड दिस वीडियो, ये एक वीडियो ही बन गया। तो आई कैन ऐड दिस वीडियो एट एनी प्लेस। ठीक है, असली शार्ट tim şu niye asli? Bana bağlansa. Ab çiğ के şu वहीं पे भी बात कर सकते हो। हाँ। देखो ठीक शोर कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल ही कर देते हैं। लेकिन है को कोड क्या रह गया, एनिमेट भी आ गया, इसमें लेआउट भी आ गया, टाइम भी आ गया। अच्छा हाँ, टाइम मैंने दिखाया नहीं। हाँ, टाइम का मतलब है आप वीडियोस बनाते हो जिसमें स्लो मोशन आता है, इसी तरह कहीं पे वीडियोस होते हैं जो फास्ट चलते हैं। जैसे अगर आप कुछ यूजर्स को दिखा रहे हो, इन बिटवीन यू वांट टू मूव दैट वेरी फास्ट, उस पोर्शन को आप बहुत तेज चलाना चाहते हो। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन either increase the speed of frames of your video or decrease that। तो अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो फास्ट आती है वो क्लिप, अगर डिक्रीज कर रहे हो तो वो स्लो मोशन का इफेक्ट देता है। जैसे अब मैं इसको फिर से डिलीट कर देता हूँ, इस टाइटल को भी मैं इस वीडियो क्लिप को फिर से यहाँ पे लाता हूँ। ये मेरी वीडियो क्लिप है, अब ये नॉर्मल स्पीड से जा रही है यहाँ तक। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ तक ये बहुत फास्ट चले, तो मैं इसको पहले काट करता हूँ इस पोर्शन को। ये आ गया मेरा वीडियो क्लिप। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके अब मैं जाता हूं, कहाँ गया ये, टाइम पे। अब टाइम मुझे बताता है इधर ये तो नॉर्मल जा रहा है, अगर आप इसको फास्ट चलाना चाहते हो फॉरवर्ड पोजीशन में या बैकवर्ड पोजीशन में भी ये जाएगा। तो फास्ट चलाने के लिए कितना, डबल स्पीड से 2x मीन्स 2 टाइम्स ट्वाइस द स्पीड जो इसकी नॉर्मल है, उससे 2 टाइम्स 4 टाइम्स 8 टाइम्स 16 टाइम्स तक आप चला सकते हो। तो अगर मैं इसको फास्ट चलाना चाहता हूँ इस क्लिप को, मैं 2x पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये वीडियो छोटी हो गई, हाफ हो गई, क्योंकि मैं इसको डबल चला रहा हूँ। अब इसको वापस मैं इसकी पोजीशन पे लाता हूँ। अब देखिए कितनी फास्ट जाएगी। अब तो फास्ट मोशन पे जा रहा है क्योंकि मैंने इसकी स्पीड ये, इसी तरह बाकी अब नॉर्मल चलेगा। नाउ आप इसी तरह इसकी जो स्पीड है स्लो मोशन पे जा सकते हो। जैसे स्लो चल रहा है, स्लो मोशन वीडियो जो आप डालते हो, तो फॉरवर्ड में कितना स्लो मोशन में 2 टाइम्स स्लो मोशन, यानी जो क्लिप है वो 2 बार आ जाएगी। ठीक है, उतना स्लो 4 टाइम्स 8 टाइम्स, ठीक है, जैसे 4 टाइम्स करते हैं। तो अब आप देखोगे इसका साइज इंक्रीज हो गया 4 टाइम्स। अब ये बहुत स्लो चलेगा,
स्लो मोशन इफेक्ट आ गया। तो बहुत स्लो चल रहा है, जो स्लो मोशन इफेक्ट आपका आता है वो स्लो मोशन इफेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और क्या रह गया इसमें, डुप्लीकेट आ गया, ये ऑप्शंस भी आ गई। हाँ, अब एक टेक्स्ट तो दिखा दिया ना मैंने, टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करना है, फिर आप उसको कहीं पे भी डाल सकते हो। आपको टेक्स्ट ऐड करना है टाइटल के जरिए, या एनिमेटेड या अनएनिमेटेड, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल्स में आ जाएगा ये टेक्स्ट। आप इसको फिर कहीं पे भी डाल सकते हो जहाँ पे आपको डालना हो। अगर आप इसको चाहते हो कि यहाँ नीचे पे आ जाए, ये टेक्स्ट छोटा करके नीचे आ जाए, तो फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, छोटा कर दो और किसी एक कॉर्नर में ले जाओ। ट्रांसफॉर्म में हम 2-3 वीडियो एक साथ कॉल वो भी कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट डाल दिया, उसको किसी पोर्शन में डालना है, वो भी कर सकते हो। कोई इमेज लाई आपने, वो जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे अपना लोगो डालना चाहता हूँ, ठीक है। मैं पहले वीडियो पे लोगो ऐड कर दूंगा, इंपोर्ट फाइल कर दूंगा। जैसे डेस्कटॉप पे मेरा एक लोगो था, लोगो ये आ गया लोगो, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अभी भी लोगो जो है बहुत बड़ा है और पूरे स्क्रीन पे आ रहा है। मैं कहता हूँ कि ये नहीं, यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाए, तो मैं इसको पहले ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। ये इतना बड़ा है, कहाँ गया, ये आ गया। मैंने इसको छोटा कर दिया, अब मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक। अब मैं पूरे वीडियो पे डाल सकता हूँ, जितना भी मेरा वीडियो है, जहां तक वो चलेगा उसके ऊपर ये कॉर्नर पे यहाँ पे मेरा लोगो आ जाएगा। तो ये वीडियो चल रहा है, मेरा लोगो चल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना है, जब आप कोई इमेज यहाँ पे डालोगे, दैट शुड बी पीएनजी। जो मैंने डिफरेंट फाइल टाइप्स आपको बताई थी, तो ये पीएनजी होनी चाहिए, क्योंकि पीएनजी में बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे इस इमेज में बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो पिछले जो पीछे है उसके दिखाई दे रहा है। अगर ये जेपेग होती, इसके कॉर्नर्स यहाँ से यहाँ तक है, जो बाकी पोर्शन है वो व्हाइट आता है, वो ठीक नहीं लगता है। तो पीएनजी इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस तरह से आप अपना लोगो भी डाल सकते हो, या कहीं पे अपना टेक्स्ट डालना है, आप पहले ही वो इमेज बना के रख सकते हो। क्या टेक्स्ट दिखाना है वो फिर यहाँ पे दिखा सकते हो, जिस पोजीशन पे चाहो वहां पे दिखा सकते हो। नाउ लास्ट थिंग, एक और ऑप्शन में यहाँ पे दिखाता हूँ। कुछ वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जैसे लाइक और क्लिक सब्सक्राइब के लिए कुछ वीडियोस आ जाते हैं, ठीक है। फिर आप वो इसमें डाल देते हो। उनमें क्या है, उनमें बैकग्राउंड ग्रीन होता है, उनको हम ग्रीन स्क्रीन कहते हैं। जैसे इस वीडियो, इसमें ग्रीन स्क्रीन है। अगर आप ये देखोगे इसका, तो उनको ग्रीन स्क्रीन कहते हैं। ग्रीन स्क्रीन का मतलब है ग्रीन एक स्पेसिफिक कलर बैकग्राउंड पे है, जिसको आप ट्रांसपेरेंट फिर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, उसमें एक इफेक्ट ऐड करना होता है। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड क्रोमो की। ये क्रोमो की आप लोगों ने सुना होगा, क्रोमो की स्क्रीन। तो क्रोमो की का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड अगर किसी कलर का है, आप उसको डिलीट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा। ये क्रोमो की मैं इस पे डाल देता हूं। अब इस सी पे आप क्लिक कीजिए, और प्रॉपर्टीज पे जाइए, आपको क्रोमो की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। यहाँ पे ये जो मुझे क्रोमो की दिखा रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। अब पहला आपको कलर देना है यहाँ पे, कि किस किस्म का कलर इसको डिलीट करना है, ताकि वो ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। पीछे से जो है, इसके पीछे जो है ये वीडियो है, वो दिखाई देना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन की कलर, राइट क्लिक कीजिए, डबल क्लिक इस पे कीजिए, और यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं। या अगर इनमें से नहीं है तो कलर पिकर इसमें आता है। इसमें कलर पिकर कहाँ पे, ये है, उन्होंने ये पिक स्क्रीन कलर दिया है। मैं ये कलर चूज करना चाहता हूँ, उसके लिए आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिकली इसी कलर को सिलेक्ट कर देगा और ओके कीजिए। अब देखिए ग्रीन जो इसमें था वो गायब हो गया, ठीक है। इसमें जो ग्रीन था वो गायब हो गया, अब खाली ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है क्रोमो की वजह से। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। ये मेरा टेक्स्ट है या कोई वीडियो है। अगर टेक्स्ट नहीं है, फिलहाल मैं टेक्स्ट भी दिखाता हूँ, इसके बाद में वीडियो पे दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट है मेरा। अब इसमें जो पीछे है ग्रीन कलर है,
और मुझे खाली ये टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए, जो टेक्स्ट व्हाइट में लिखा हुआ है, बाकी जो है वो सारा डिलीट होके ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि ये जो पीछे इसके पीछे वीडियो है ये दिखाई देना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस पे जाना है इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स में आपको ये क्रोमो की आ जाएगा, ये क्रोमो की ड्रैग करके इसमें डालना है, आपको ये सी इस पे आ जाएगा, इस पे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पे जाइए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो इसका आईडी है, फज है, और उसके बाद है की कलर। अब इस की कलर को सिलेक्ट करना है कि आपका जो बैकग्राउंड है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो किस किस्म का है, किस कलर का है। इस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक कलर है, व्हाइट है, ब्लैक है, आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप यहाँ से ही सिलेक्ट करना चाहते हो एग्जैक्ट कलर, तो आप इस पे क्लिक कीजिए पिक स्क्रीन कलर, और यहाँ में से वो स्क्रीन कलर सिलेक्ट कीजिए। अब याद रखिए यहाँ पे ये एक ही कलर का होना चाहिए, अगर 2-3 कलर का है तो उसको ये डिलीट नहीं कर पाएगा। फिर ओके कीजिए, अब देखिए वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, किसी एक जगह पे ला सकता हूं जहां पे मुझे लाना होगा। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा, या वीडियो क्लिप है ये, तो वहीं पे आ जाएगी। तो अब देखिए ये यहीं पे आ जाएगी, ये आ गई, जो पीछे कलर है वो भी आ गया हमारा इसमें। तो इसी तरह अगर सही सिलेक्शन नहीं हुई, इसमें कुछ थोड़ी ग्रीनिश और भी दिखा रहा है, देन यू कैन चेंज दिस फज। इसका वैल्यू जितना आप बड़ा रखोगे उतना इसमें फिर एक्यूरेसी आ जाएगी। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने कोई वीडियो नेट से डाउनलोड कर दिया। अब नेट से डाउनलोड करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस यू हैव टू सिलेक्ट, दोज आर कॉल्ड ग्रीन स्क्रीन वीडियोस। आप YouTube पे भी वो डाउनलोड कर सकते हो। जैसे YouTube में मैं जाऊंगा, सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन, ये डिफरेंट इफेक्ट्स के वीडियोस है, इनमें ग्रीन स्क्रीन है। तो जब आप इनको वीडियो पे डालोगे, क्रोमो की यूज करोगे, तो ये जो ग्रीन है वो गायब हो जाएगा, खाली ये टेक्स्ट दिखाई देगा जो आपको टेक्स्ट डालना हो। ठीक है, अब इसके लिए डाउनलोड करने के लिए यू शुड हैव सम डाउनलोडर। तो डिफरेंट डाउनलोडर्स आते हैं इसमें, जिनको डाउनलोड इनको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस वाले वीडियो को देखते हैं, अगर ये डाउनलोड हो गया, मेरे पास भी कुछ डाउनलोडर है, पता नहीं उनकी लाइसेंस कैसी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 4K यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई और है, फ्री यूट्यूब क्लिक है। अगर ये वीडियो डाउनलोड हुआ, ये भी जा चुका है, नहीं डाउनलोड है। मैं एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसी को अब यूज करता हूँ। उसमें पीछे से ग्रीन स्क्रीन है, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ उसको, डाउनलोड्स में है वो कहीं पे, ये वाला। तो ये एक वीडियो है, मैं इस वीडियो को अपने वीडियो पे इसमें डालना चाहता हूँ। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं कि ये वीडियो क्या है। मैं इसको टाइमलाइन पे लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक हैंड है, ये हैंड आना चाहिए कहीं पे, अगर आप कहीं पे डालना चाहते हो। जैसे आप कहते हो कि सब्सक्राइब एंड क्लिक, या कोई और, या किसी स्टूडेंट को कोई देना है, तो अब मैं चाहता हूं कि इस पे क्रोमो की अप्लाई हो जाए। मैं इसको थोड़ा सा, ये छोटा ही है, बहुत बड़ी छोटी क्लिप है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब क्या करना है आपको, अगेन यू हैव टू गो टू इफेक्ट्स, यहाँ पे क्रोमो की है, मैं इस पे डाल देता हूँ। ये आ गया सी स्मॉल आइकन। मैं इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, कलर चूज करूंगा, कौन सा कलर चूज करना है, ये क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे वो कलर मैंने पहले सिलेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू मूव द कर्सर टू दिस। तो ये कलर है, अब जाके मैं यहाँ पे फिर से कर दूंगा पिक द कलर, ये वाला कलर है। ओके, आप देखो वो गायब हो गए। अब स्टिल इसमें कुछ थोड़ी सी रह गई है, ग्रीन दिखा रहा है, इसको डिलीट करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द फज। जैसे यहाँ पे मैं 100 डालता हूँ, देखता हूँ हो गया थोड़ा सा डिलीट, नहीं जैसे 500 देते, नहीं उसने पूरा ही डिलीट कर दिया। 200 देते, अभी भी दिखा रहा है 250 देते, अभी देखो लगभग हो गया ठीक। ठीक है, जैसी एक्यूरेसी होगी वैसा ही चलेगा। तो उसके बाद नाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस, और ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो। इस आइकन को आप कहीं पे भी ले सकते हो,
जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, आप बोलना चाहते हो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो दिस वे यू कैन ऐड डिफरेंट इफेक्ट्स। तो ये तो सिंपल सॉफ्टवेयर है, इसमें ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जो बेसिक वीडियो एडिटिंग है यहाँ पे अभी आप कर सकते हो। जब आपने फिनिश कर दिया पूरा वीडियो, एडिट कर दिया जो भी आपको टाइमलाइन में डालना था, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपोर्ट इट। या तो आप फाइल में जा सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, या यहाँ पे ये ऑप्शन है एक्सपोर्ट। जी सर। तो यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट पे जाओगे तो एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप फाइल का नाम रख सकते हो, माय वीडियो, कुछ भी। कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो उसकी लोकेशन दे दो, जैसे वीडियोस में ही हम रखेंगे ये वाला वीडियो, ठीक। उसके बाद फॉर्मेट, प्रोफाइल आप क्या करना चाहते हो, कौन सी प्रोफाइल का। आप डीवीडी पे इसको राइट करना चाहते हो, ब्लू रे पे, डिवाइस पे या वेब पे, क्योंकि मोस्टली हम वेब पे ही डालते हैं। तो ये आपको वेब के कुछ डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा, जैसे फ्लिकर पे डालना है, यूट्यूब पे डालना है, यूट्यूब एचडी पे डालना है, किस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके रखना है, और क्वालिटी कैसी रखनी है, लो हाई। जितनी हाई रखोगे उतना बड़ा इसका साइज होगा, जितनी बड़ी वीडियो होगी। अगर मीडियम रखोगे या लो रखोगे तो छोटी आ जाएगी। वीडियो प्रोफाइल कैसी रखनी है, जैसे मैंने परसों आपको फ्रेम्स बताया था, 24 फ्रेम्स का रखना है, 25 का। तो जितना आप ज्यादा रखोगे 30 फ्रेम्स, तो उतना बड़ा साइज हो जाएगा। तो आप डिफॉल्ट ही यहाँ पे भी रखो। उसके बाद एक्सपोर्ट वीडियो, ये कुछ टाइम लेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वीडियो, और उसके मुताबिक ये टाइम लेगा। यहाँ मैंने आपको कहा था ग्राफिक्स कार्ड काम आती है। अगर आपके सिस्टम पे ग्राफिक्स कार्ड इंस्टॉल्ड है तो फिर ये बहुत फास्ट हो जाता है। आप मेन प्रोसेसर ज्यादा यूज नहीं होता है, उसके लिए ग्राफिक्स कार्ड यूज होती है। तो यहाँ पे ये छोटी ही क्लिप थी, अभी ये इसको रेंडर कर रहा है, वीडियो में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद इस लोकेशन पे मुझे अपना वीडियो मिल जाएगा, वीडियोस में उसका नाम होगा माय वीडियो, जो भी आपको। उसके बाद आपको ये यूट्यूब पे डालनी है, या अपने जो कंटेंट है, या आप किस पे डाल सकते हो, जो आपका प्रोवाइडर है, जैसे मूक्स प्रोवाइडर है, मूडल या एडेक्स, जिस पे भी आपको डालना होगा वहां पे डाल सकते हो। MOOCs की जो वीडियोस यूजुअली आते हैं उनमें स्क्रीन रीडिंग ही होता है, स्क्रॉल होता रहता है बहुत सारा टाइप में। क्या, जैसे कोई भी कंटेंट वो दिखा रहे हैं, वो तो एनिमेशन, वो पहले पीपीटी बनाते हैं कुछ, फिर उसी की स्क्रीन कास्टिंग करते हैं, वो तो चलेगा ना। वो आपको एनिमेशन में डालने में, जो प्रेजेंटेशन है उसी में एनिमेशन डालने। तो ये हो गया एक्सपोर्ट 100% डन। अब अपना वीडियो हम देख सकते हैं। हम वीडियोस में जाएंगे, कहाँ गया, ये ऊपर है वीडियोस, इसमें हमारा ये वीडियो है माय वीडियो। तो ये पहले कुछ पोर्शन था जो कि ब्लैंक है, कहाँ गया, यहाँ से वीडियो चल रहा है। इसमें हमने स्लो मोशन डाला था पहले, तो ये हाथ भी आ गया। तो पूरा वीडियो आपका बन के आ गया। नाउ दिस इज रेडी टू बी अपलोडेड ऑन द डिफरेंट मीडिया, जहाँ प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके होंगे। जैसे मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ, कहीं और पे भी डाल सकता हूँ। तो ये आपका वीडियो बन के तैयार आ गया। सो दिस वाज रिगार्डिंग OpenShot। अब यही वीडियो एडिटिंग आप कहाँ पे कर सकते हो, यू कैन यूज अदर सॉफ्टवेयर। अब मैं जल्दी से एक में दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे वंडरशेयर का फिल्मोरा है, लेकिन ये पेड सॉफ्टवेयर है, दिस इज नॉट फ्री। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स है। तो ये आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए, दिस इज नॉट फ्री। इसमें फ्री ट्रायल भी आपको मिलेगा 1 मंथ का, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन उस 1 मंथ में आपको उसमें एक वाटरमार्क आएगी, जैसे यहाँ पे नीचे बिंग लिखा हुआ है, ऐसी वाटरमार्क आएगी फिल्मोरा। और लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके लास्ट पे भी फिल्मोरा का टैग आ जाएगा। तो ये स्टार्ट कर रहा है। अब देखो ये चेकिंग जीपीओ ड्राइवर, अगर इसमें ग्राफिक्स कार्ड होती तो इस वीडियो एडिटिंग बहुत इजी हो जाती है। उसमें वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, फिर इसमें टाइम लेता है। अब मैं इसका इंटरफेस आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी, आप इसको यूज कर सकते हो अगर पेड लेना चाहते हो। तो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द प्रोजेक्ट। किस किस्म का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, वाइड स्क्रीन का,
जैसे 16:19 एस्पेक्ट रेशियो के जो मैंने परसों कहा था, जिसकी लेंथ बड़ी होती है और उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी होती है। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए या पोर्ट्रेट के लिए या स्टैंडर्ड या सिनेमा के लिए बनाना चाहते हो तो हम तो वाइड स्क्रीन ही रखेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट, ये सिमिलर इंटरफेस आपको मिल जाएगा जो वहां पे मिल रहा था। अब यहाँ पे ये वो पैन है जहां पे आप डिफरेंट मीडिया इंपोर्ट करते हो, यहाँ प्रीव्यू आ जाएगी, ये आपकी टाइमलाइन है। अब इसमें बहुत सारे, जैसे आप किसी टाइमलाइन को इनविजिबल कर सकते हो, ठीक है, लॉक कर सकते हो, इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। वहां पे भी लॉक ऑप्शन थी, तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, मैं अभी दिखाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये प्रोजेक्ट के दिखाएगा फोल्डर्स। अब टॉप पे आपको डिफरेंट टैब्स मिल रही है। ये मीडिया है जहां पे आप डिफरेंट वीडियो क्लिप्स ऐड कर सकते हो, जैसे अभी जो हमने वीडियो बनाया था, वीडियोस में है, ये इस पे डालते हैं, इंपोर्ट हो गया। नाउ यू कैन क्लिक एंड ड्रैग इट टू द टाइमलाइन। अब ये ऑप्शन दिखा रहा है, ये इसकी फ्रेम रेट देख रहा है, इसकी फ्रेम रेट है 24 FPS। ठीक, ये जिस पे काम कर रहा है, जो मैंने प्रोजेक्ट अभी खोला, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है 25 FPS। अब ये कन्वर्ट भी कर सकता है, आप प्रोजेक्ट सेटिंग पे इस पे कन्वर्ट करोगे तो ये आप करेगा इसको या डिक्रीज करेगा। ठीक है, मैं इस पे करता हूँ, तो ये मेरा वीडियो आ गया। अब इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, जैसे इसमें जो ऑडियो है उसका कंट्रोल यहीं पे आ जाता है। जब ये हाथ आप ले जाते हो, यू कैन इंक्रीज द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑडियो। ये जो ऑडियो है ना नीचे दिखा रहा है, यू कैन डिटैच ऑडियो, इसमें भी ऑप्शन आती है डिटैच ऑडियो। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शन इसमें आ जाती है, क्योंकि ये पेड वन है, इसमें बहुत सारी ऑप्शन भी मैं दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे आप मीडिया ऐड करते हो, चाहे इमेजेस ऐड करनी है, चाहे आपको वीडियो ऐड करना है, ऑडियो ऐड करना है, एनिमेशन ऐड करनी है, जो भी आपको ऐड करना होगा, यू कैन ऐड दैट हियर। ठीक है, उसके बाद उनको ऐड कर सकते हो डिफरेंट टाइमलाइंस। ये आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको, जैसे मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, इसमें वो ऑप्शंस आती है, क्योंकि ये पेड वन है। तो उसके बाद क्या करना है, देन यू कैन गो फॉर ऑडियो। बहुत सारे ऑडियो आपको खुद ब खुद यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैं स्टार्ट में ये इमेज डालना चाहता हूँ, इसके नीचे कुछ ऑडियो डालना चाहता हूँ, यहाँ आपको मिल जाएंगे। जैसे ये ऑडियो है, मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी ऑडियो है, इसको मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ, यू कैन जूम इन एंड जूम आउट, यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैं इसको छोटा कर दूंगा, मुझे इसका थोड़ा सा पोर्शन चाहिए, तो मैं आप लास्ट में ले जाऊंगा, उसको छोटा करके यहाँ तक लाऊंगा। अब जब मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा तो इस इमेज के नीचे ये ऑडियो हो जाएगा, चल रहा है ये ऑडियो, ऐड कर सकते हो। इसमें ऑडियो में डिफरेंट इफेक्ट्स कर सकते हो, फेड इन इफेक्ट, इस पर डबल क्लिक कर दो, आपको ये ऑडियो के इफेक्ट्स दिखाएगा। अगर फेड इन डालना है तो डाल सकते हो, फेड आउट कितना डालना है, कितने सेकंड का डालना है। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज अगर इसमें है तो ये ऑटोमेटिकली वो रिमूव कर देगा। इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। तो अब अगर मैं इसको रन कर दूं तो पहले थोड़ा सा फेड इन इफेक्ट इसमें आ जाएगा। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर टाइटल्स। अभी मैं जो दिखा रहा था वहां पे आप टेक्स्ट डिफरेंट टाइटल्स इसमें ऐड कर सकते हो, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है बहुत सारे। जैसे यहाँ पे मैं ऐसा टेक्स्ट चाहता हूँ, ये प्रीव्यू दिखा रहा है कैसे टेक्स्ट आएगा, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मैंने ड्रैग किया और डाल दिया, यहाँ पे आ रहा है। अभी आपको दिखाएगा कि ये कैसा आएगा। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को रन कर दूंगा, वीडियो चल रहा है तो पहले ये टेक्स्ट आ गया एनिमेटेड। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स आ जाएंगे। कस्टम ओपनर्स, ओपनर्स का मतलब है जो स्टार्ट में आप डालते हो जब आप वीडियो को स्टार्ट करते हो। इसी तरह लोअर थर्ड्स, लोअर थर्ड्स का मतलब है जहाँ पे वीडियो चल रहा है, जैसे ये वीडियो चल रहा है, आप यहाँ पे अपना नाम देना चाहते हो, किस किस्म का नाम देना चाहते हो, ये वाला मैं लाता हूँ। तो इस पर डबल क्लिक कर दो और फिर एडिट कर दो टेक्स्ट। ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशनिंग जो भी आपको करना होगा। अब ये वाला नीचे APGDC पुलवामा, मैं जल्दी जल्दी इसमें जा रहा हूँ क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम। तो इसको आप पोजीशन कर सकते हो कहाँ पे डालना है, इसका साइज चेंज कर सकते हो। ठीक, अब ये बन गया, कहाँ पे रखना है ओके कर दिया। अब मैं जब वीडियो चला रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ये फलाने बनाया है, ये इसका ऑनर है। क्या सब टाइटल्स आप डाल सकते हो, बहुत सारे एंड क्रेडिट्स जो लास्ट पे आते हैं वो डाल सकते हो, जैसे ये वाला है, ये लास्ट में आ जाएगा किसने बनाया। देन देयर आर ट्रांजिशन इफेक्ट्स, जो मैंने वहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स बताए थे, इसमें बहुत सारे हैं। 3D ट्रांजिशन इफेक्ट्स है,
स्फेरिकल है, ये रिपल। इसमें वो ट्रांसक्रिप्शन आता है, जैसे वीडियो में कोई बात कर रहेगा तो नीचे से वो सब नहीं, वो ऐड अलग से करना पड़ता है, वो अलग से ऐड करना। करना। हाँ, वो नहीं, वो बनानी पड़ती है उसके लिए फाइल अलग। फिर जब यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे वो फाइल देनी पड़ती है, उसमें टाइमिंग होती है। जो परसों मैंने वर्ड आपको दिखाया था ना ऑनलाइन, वो टाइमिंग के साथ देता है वो सबटाइटल्स, उसकी फाइल आती है, SRT फाइल आती है सबटाइटल की, वो आप बनाते हैं फिर। तो ये इफेक्ट्स है। कहीं पे भी मैं वीडियो में इफेक्ट डालना चाहता हूँ, या मैं इस वीडियो को कहीं पे कट पहले करना चाहता हूँ, आपको ये कर्सर वहां पे ले जाना है, और ये देखिए यहाँ पे वही आइकन है जो वहां पे था, स्प्लिट। मैं क्लिक कर दूंगा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कोई इफेक्ट डालना चाहते हो, ट्रांजिशन का इफेक्ट, ये वाले जो इफेक्ट है ये दिखा रहा है कैसा आएगा ये, तो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, जैसे ये देखो ऐसे। तो जिस किस्म का इफेक्ट आपको डालना होगा, यहाँ थाउजेंड्स ऑफ इफेक्ट्स आते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी आते हैं जो आप बिटवीन 2 वीडियो क्लिप्स डालते हो, इफेक्ट्स भी आते हैं जो आप सिर्फ एक वीडियो क्लिप पे डालना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये वीडियो क्लिप यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि जैसे 70s का टाइम है वैसा दिखना चाहिए, तो ये वाला पोर्शन, तो मैं इस पोर्शन को यहाँ पे ला दूंगा। अब देखिए इसका कलर कैसा आ जाएगा प्रीव्यू में, ये देखो जैसे वो 70s का टीवी पे चल रहा है कुछ। ठीक है, इसी तरह अगर आप कहीं पे कोई किसी का फेस हाइड करना चाहते हो, तो फेस हाइड करने के लिए इस वाले इफेक्ट को डालिए, और फिर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो, इसको आप फिर एडजस्ट कर सकते हो जहां पे फेस को हाइड करना है ना, या कोई पासवर्ड आपने कहीं पे एंटर किया तो उसको हाइड करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस। तो ये सारे इफेक्ट्स यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ये देखो कितने हंड्रेड्स ऑफ इफेक्ट्स। देन देयर आर सम एलिमेंट्स दैट यू कैन ऐड टू योर वीडियो, जैसे ये वाला बूम कहीं पे, जैसे वो आजकल वो मजाहिया वीडियो आती है ना यूट्यूब पे, वो ऐसे कोई इफेक्ट डालना है कहीं पे बूम, तो ये वाला यहाँ पे आ जाए, ये देखो बूम। तो जिस किस्म का इफेक्ट डालना है, ट्यूटोरियल टाइप के इफेक्ट्स है, कहीं पे राइट दिखाना है, लेफ्ट एरो कुछ भी दिखाना है वो डाल सकते हो। देन देयर आर स्प्लिट स्क्रीन, अगर आपको 2 वीडियोस एक साथ चलानी है लेफ्ट और राइट साइड, तो आप ये डाल सकते हो वहां पे स्प्लिट स्क्रीन। अब ये डाल दिया, अब इसको आपको 2 वीडियोस डालने पड़ेंगे, लेफ्ट साइड में एक और राइट साइड में एक। अब यहाँ पे ये 2 वीडियो चलेंगे, ये लेफ्ट में चलेगा, ये वाला राइट में चलेगा। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड स्प्लिट स्क्रीन। तो डिफरेंट स्प्लिट, कहीं पे आप इमेजेस दिखाना चाहते हो बीच में 2 4 5 6, तो स्प्लिट स्क्रीन में वो डाल दो, हो जाएगा। तो जब आपने ये सारा फिनिश कर दिया, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर दी, डिफरेंट ऑप्शन है आपको, देन यू कैन एक्सपोर्ट दैट। एक्सपोर्ट करने के बाद यू विल गेट ए बंच ऑफ ऑप्शंस। लोकल के लिए है, डिवाइस के लिए है, किसी स्पेसिफिक एंड्रॉइड या पिक्सल डिवाइस है, कोई भी आईफोन। यूट्यूब के लिए है, आप डायरेक्टली यहाँ से यूट्यूब को भी अपलोड कर सकते हो ये वीडियो, आप सीधे ये एक्सपोर्ट भी करेगा और सीधे अपलोड भी कर देगा। नेट चलना चाहिए, तो आप टाइटल लिखोगे, जैसे हम वीडियो जब अपलोड करते हैं वहां पे टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैटेगरी डिफरेंट टैग्स देते हैं जिससे वो सर्चिंग में हेल्प आती है। पब्लिक रखना है कि प्राइवेट रखना है, लेकिन फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट योर यूट्यूब चैनल विद दिस, ये आपको साइन इन मांगेगा, आपको कनेक्ट करना है। तो पहले लोकल पे रखना है, तो किस फॉर्मेट में रखना है, हमने परसों पढ़े थे बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट्स, तो वो सारे आप काम आ रहे थे। तो जैसे MP4 पढ़ा था, वीडियोस मीडिया फॉर्मेट पढ़ा था, AVI पढ़ा था, ठीक है, MKV पढ़ा था हमने, तो जिफ अगर छोटी है कुछ एनिमेशन, MP3 खाली ऑडियो। MP3 का मतलब है अगर आप इसमें से सिर्फ ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना, तो ये ट्रिक हम यूज करते हैं अगर इसके थ्रू हम ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करेंगे, खाली ऑडियो को, तो मैं इसको MP3 में रखूंगा तो खाली ऑडियो आ जाएगा, फिर मैं उस पर कोई डिफरेंट इफेक्ट डाल सकता हूँ। जब आपने कर दिया, जैसे MP4 में डालना चाहता हूँ, पोजीशन, लोकेशन कहाँ पे, उसके बाद साइज, उसके बाद फ्रेम्स तो मैंने सिलेक्ट करके रखे हुए। ये मुझे टेंटेटिव साइज दिखा रहा है, इसका क्या होगा 141 मेगापिक्सल, इसी के अराउंड कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये इसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। नाउ इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर दैट योर वीडियो विल बी रेडी। तो रेडी फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जहां पे आप इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको। तो ये एक सॉफ्टवेयर है विच यू कैन यूज, ये पेड है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से वीडियो बनाओ तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। सो इसी तरह कैमटेशिया है, पता नहीं वो इसमें इंस्टॉल है, हाँ कैमटेशिया है इसमें। कैमटेशिया मैंने आपको कहा, अच्छा एक चीज मैं इसमें बताना भूल गया, दिस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड स्क्रीन एज वेल, मैं वो भूल ही गया, वो मैं पहले जल्द से ऑप्शन दिखाता हूँ।
अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी हो और फिर उसकी एडिटिंग करनी हो, तो उसके लिए फिल्मोरा कैसे काम आता है। जैसे यहाँ पे मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा अब। तो ये फिर से मैंने खोल दिया इसको। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। जैसे यहाँ से वीडियो आप इंपोर्ट कर सकते हो, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑप्शन एज वेल। यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएगी। आप खाली वेबकैम को रिकॉर्ड कर सकते हो, आप खाली स्क्रीन, जो स्क्रीन है आपका, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और यू कैन रिकॉर्ड वॉइस ओवर, जो आपने वीडियो रखा है उसको वॉइस ओवर कर सकते हो नीचे। तो पहले मैं रिकॉर्ड स्क्रीन को करता हूँ, मैं क्लिक कर दूंगा इस पे, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। ये दिखा रहा है, ये जो ग्रीन लाइन आपको आ रही है, ये दिखा रहा है कि कौन सा पोर्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद यू कैन गो फॉर सेटिंग्स। यू कैन गो फॉर सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप पहले ऑडियो वीडियो चेक करते हैं कि ऑडियो कौन सी ऑप्शन है, माइक्रोफोन कौन सी इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फाइल सेव हो जाएगी वो कहाँ पे सेव हो जाएगी, रेट क्या होगी उसकी, यहाँ पे देखिए 60 फ्रेम्स तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। 120 इसमें ऑप्शन नहीं है, वो 60 तक है, तो 25 रखते हैं। क्वालिटी कैसी रखनी है रिकॉर्डिंग की, गुड, बेटर, बेस्ट, तो जितना आप रखोगे उतना ही साइज। रिकॉर्ड अगर आपको स्पेसिफिक टाइम के बाद करना है तो वो कर सकते हो। देन माउस कर्सर्स, जहां जहां पे आप माउस दिखाओगे वो ऐसा दिखाई देगा ग्रीन, और उसके बाद जब क्लिक करोगे वहां पे कलर चेंज हो जाएगा। पॉज कैसे करना है और स्टार्ट स्टॉप कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, पॉज रिज्यूम कीजिए यूजिंग दिस पेज अप, और स्टार्ट स्टॉप कीजिए पेज डाउन से, ठीक। कैमरा को भी रिकॉर्ड करना है, क्लिक कीजिए, ये कैमरा दिखाएगा फिर। अब चूंकि मेरा कैमरा अभी यूज्ड है, मैं पहले उसको फ्री करता हूं। यहाँ पे मैं पहले कैमरा को फ्री करता हूं, उसके बाद देखता हूं इसको। नहीं, क्योंकि वो जूम ऐप को अभी अलॉटेड है, ये नहीं दिखा रहा है, तो ये नहीं मान रहा है। वो कहाँ गया जूम, जूम यहाँ पे, तो ये नहीं दिखा रहा है। नाउ वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द सेटिंग्स, क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये आपको ये टाइमर दिखाएगा। उसके बाद नाउ इट इज रिकॉर्डिंग योर स्क्रीन। जो भी आप करोगे, जहां पे भी आप कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हो, कुछ भी दिखाना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर दिखाना चाहते हो, इट इज करंटली रिकॉर्डिंग दैट, ठीक है। तो जब आप इन बिटवीन अगर आप कहीं पे पॉज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने शॉर्टकट्स रखे हुए हैं। मैंने पेज अप रखा हुआ है, तो ये शॉर्टकट है।
आप फिर से पेज अप पे क्लिक कीजिए तो ये फिर से रिकॉर्ड कर रहा है जो आपने शॉर्टकट की रखी होगी। वंस यू आर सेटिस्फाइड कि बस स्टॉप करना है तो पेज डाउन। अब देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये वीडियो क्लिप यहाँ पे ला ली। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये चल रही है। अब इसको आप एडिट यहीं पे कर सकते हो। अगर कुछ पोर्शन डिलीट करने हैं मैं इसको टाइमलाइन पे लाऊंगा और आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिकॉर्ड एज वेल एज देन एडिट। इसके लिए बेस्ट है ये फिल्मोरा या कैमटेशिया। अब मैं कैमटेशिया नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो हमें वैलिडिक्टरी सेशन भी अब स्टार्ट करना है। तो दिस वाज रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्शंस। तो अब मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूं, टोटल अपना सम अप करता हूं यहाँ पे। आई विल स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, तो जो ये एफडीपी था, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इस एफडीपी का टारगेट हमारा था जो मूक्स कंटेंट है, जो मूक्स के लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हो, हाउ टू डिजाइन दैट कंटेंट। तो वो कंटेंट बनाने के लिए आपने देखा कि उसके लिए आपको टेक्सचुअल सॉफ्टवेयर की भी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ग्राफिकल, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो मैंने आपको लगभग वो सारे दिखा दी। इसमें खाली एक रह गया जो हम नेक्स्ट जो एफडीपी इसके बाद होगा, एडवांस्ड इसका वर्जन होगा, उसमें हम मूक्स प्लेटफॉर्म लेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन, हाउ टू क्रिएट द प्रेजेंटेशन, वो इसमें रह गया। तो इसमें हमने कवर किया, हमने वी स्टार्टेड विद ऑफिस 365 कैसे अवेल करें। उसके बाद मैंने आपको दिखाया हाउ टू यूज डिफरेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉफ्टवेयर फॉर टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग के मुतालिक, टेक्स्ट के मुतालिक डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी। देन आई शोड यू हाउ टू यूज डिफरेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉफ्टवेयर टू एडिट इमेजेस। इमेजेस क्या होती है, इमेजेस के डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। देन वी स्टार्टेड विद हाउ टू गो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्क्रीन कास्टिंग। तो स्क्रीन कास्टिंग कैसे करनी है, स्क्रीन कास्टिंग होती क्या है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो सारा हमने कवर कर लिया इसमें। नाउ आई होप कि आप कंफर्टेबल होंगे कि आप मूक्स कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई भी कहीं पे भी हेल्प की जरूरत है तो आई एम इन द डिपार्टमेंट, कहीं पे भी किसी भी टाइम। इन एडिशन टू दैट मैंने आपको कैनवा दिखा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है इसमें, तो वो भी आप लोगों ने देखा। सो दिस वाज द फर्स्ट पोर्शन, जो मूक्स जिसकी बात हम कहते हैं। तो मूक्स में हमें एक तो प्लेटफॉर्म होता है और कंटेंट होता है। कंटेंट कैसे क्रिएट करें वो मैंने दिखा दिया। आप क्या कंटेंट क्रिएट करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अपने सब्जेक्ट के मुताबिक जो भी कंटेंट क्रिएट करना है आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट रिमेन्स के मूक्स प्लेटफॉर्म। अब जब आपने कंटेंट बना दिया, अब आप प्लेटफॉर्म कैसे यूज करोगे। जैसे हम मूडल यूज करते हैं या एडेक्स यूज करते हैं, तो वो हम यूज कैसे करेंगे ताकि we connect with you, our students, we share this content। और उसके साथ साथ जो 4 कॉर्नर्स हमने मूक्स के देखे थे वो कैसे फुलफिल हो जाते हैं, तो वो सारा नेक्स्ट इसके बाद जो एफडीपी हम करेंगे दैट विल बी एन एडवांस्ड एफडीपी। उसमें हम आपको वो सब दिखाएंगे, मूडल कैसे क्रिएट यूज करते हैं, एडवांस पूरा मूडल दिखाएंगे हम। तो उसके बाद प्रेजेंटेशन रह गया हमारा। सो दिस वाज ऑल। इन बिटवीन अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, I will enable the mute yourself। तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई फीडबैक देना है regarding this FDP, before we invite our principal sir and our head of the department, अगर किसी को कोई फीडबैक भी देना है तो he can go for that voluntarily, अगर किसी को देना है तो। अदरवाइज थैंक्स फॉर वाचिंग, क्योंकि इसमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स थे, जैसे हमारी फीमेल, मोस्टली फीमेल फैकल्टी मेंबर्स थी, डॉक्टर सादत, जैसे यहाँ पे थी यास्मीना जी थी, या केमिस्ट्री की थे हमारे मसरत मासवा। तो आई एम हाईली थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्होंने फिजिकली यहाँ पे टाइम दिया, उन्होंने ये अटेंड किया क्लासरूम में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। सो इट वाज नाइस टू सी दैट, क्योंकि इनका जो है एंथुजियाज्म है कि ये चीजें सीखे हम, तो सीखने के लिए। इन एडिशन टू दैट अगर किसी को ये मिस हुई है वीडियोस, ये YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है, वी आर रिकॉर्डिंग देम, वी आर देन एडिटिंग देम, ये अवेलेबल है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। तो अगर किसी को फीडबैक देना है तो ही कैन कम फॉरवर्ड। मैम आप तो फर्स्ट आई इनवाइट डॉक्टर सदर, जो कि यहीं पे अवेलेबल है, तो वो अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं। सो प्लीज मैम।
Good afternoon, everyone. This FDP has really been very encouraging for me. I have learned so much from Professor Iqbal Sahab, and I'm sure I will use all that I have learned in this past week in creating content that is useful for my students. I'm really thankful for your generosity and the way you teach. You're a very effective instructor, a very good educator. This FDP will go in a long way in helping us develop content for our students. Thank you very much. Thanks, ma'am. Thanks for these words. So, anyone else who voluntarily want to give some feedback regarding this FDB, he's most welcome. So, no one. So, thanks for watching this video. Now I invite our head of the department, Professor Asif Iqbal Kawusa, to formally conclude, to give the conclusion remarks regarding this FDP. Sir, please. Good afternoon, all the participants. I thank you all in participating in this program of 1 week. I hope that you are now a bit well informed about how to create and how to use your resources which you create using these softwares, what you have learned in this week. As I told you in the initial starting lecture that a teacher is a facilitator, he is a guide. As a teacher, we have to only show the path to the students, because the information, knowledge, there's a ocean of information available in the net, on the internet. So what we need to do, we need to basically show them the path. We need to act as a facilitator, how to get the information out of it, because this information can be relevant to one field, and it can be also at the same time irrelevant to the other field. So as a student of a science field has its own information available, and the student of the humanities and literature student has to get the information in the another field. So what we need to do, what I think that we need to be facilitator. So this is the art what we need to learn, and I hope this might have been a bit fruitful to you, that Professor Iqbal Saab, he is well versed with these things, and now he is our nodal officer for this South Kashmir, for this digital initiative. And I hope we will learn new things from him also. As an student of computer science, I will also like to know more from him, because he's very much well versed with these technologies, and he's basically interested in these things. So I thank him for this FDP, for conducting this FDP and the lectures what he has delivered in this week. Now I invite our worthy principal, Professor Farooq Ahmad Andrabi, to say the concluding remarks in this workshop. Bismillahirrahmanirrahim. Professor Kawusa Sahab, Head Department of Computer Applications. Mr. Iqbal Sahab, Professor Iqbal Sahab, Convener Digital Initiatives of the college and the main resource person for this program, FDP program, other faculty members who are the participants for this program, and
other technical persons who were involved with the program. So, Basically, this is a very privilege for me that this college was able to hold this program of e-content training, and for which there was a very active role given by Dr. Iqbal Sahab, Assistant Professor, Computer Applications, and has been the main resource person for this program. And this is a platform which joins all the faculty members, and this is a platform where everyone has to come forward, and nobody can shy away from participating in these programs, because e-content is emerging as the major aspect in delivery of the academic portion, academic facility to the students, for which there are various modes now. Maybe it may be MOOCs, maybe it may be any other app, for example, that WISE app. And everybody has to learn, everybody has to update, and for which the computer application is coming forward, and they have organized this program. On behalf of my college, and on my personal behalf, and on behalf of the faculty, I am expressing my thankfulness for the computer application department in particular, in general, and Professor Iqbal in particular, that they were very keen in the organizing this program. And I hope that this program, which has lasted almost a week now, this should have done its purpose, and many things should have been come within the minds of the people, due to which they should have refreshed themselves. They should have taken their shy away from using this e-content or developing this e-content. Further, we have procured some equipments in terms of those kiosks, which are integrated systems by which we can give the delivery of this e-content to the students. There has been a training of these kiosks also. And further, I have received a message from the company who has delivered these kiosks. They are themselves coming to the college in the very near, and they will be giving the training to the staff. And when we are trained, perhaps this training will give us an easier method in getting the second training from them. I lastly am very thankful, firstly, to the computer application department for making this program a success. Second, the participation of the teachers in this program. And thirdly, the people who were behind the program, maybe the staff of the computer application department, in terms of their contingent paid employees, local fund employees, or any other employee who has put their effort behind this program. I am thankful for every person who was involved in one way or the other way with the program. Perhaps I cannot name everybody here, but my sincere and my heartfelt thanks
to each and everybody for the organization of this program. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for these kind words. We have been encouraged by this. And finally, the conclusion is the vote of thanks. So I invite my senior colleague of the department, Professor Farooq Ahmad Pandit, for the vote of thanks. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This gives me immense pleasure to thank firstly my worthy principal, Professor Farooq Ahmad Indrawi Sahab, who gave us a vent, who guided us properly to go for this, to conduct this program, FDP, for our faculty members. In the first initiative, a big chunk of faculty members from outside the college have registered here. But as per Iqbal Sahab, he told us that, okay, let us just stick it up to our college level first. So after that, I'm very much, I thank our head of the department, Professor Asif Iqbal Kausa Sahab, who managed this show. And last but not least, Professor Iqbal Sahab, who is well versed in technologies, young guy. He's, as rightly said by Professor Kausa Sahab, that he's nodal officer for South also. So he's taking this initiative as a spirit, because he induced so many things in this FDP, wherein I think, though we didn't got enough time to just learn things, because we are very much busy with election schedule also. So we missed that, but inshallah in future, we'll be going to conduct more programs and we'll be very much involved here. So Iqbal Sahab has done a commendable job and helped department as well as the college to get things done. And I thank Professor Manan Sahab, who is always behind our this technical support, and our staff of the department, who helped a lot. They arranged all things. So, and I'm also thankful to those faculty members who have given their, who gave their consent to just join this and joined wholeheartedly. Among them, I can say that one of our colleague, she's sitting with us offline, in offline mode. She was very much interested, Dr. Sadapji from Department of Botany. I saw her always here. I'm again thankful to her also. So with these words, I thank you once again, sir, all my principal Sahab, Iqbal Sahab, Kausa Sahab, Manan Sahab, and the faculty members who joined this program. Thank you, sir. Assalamu alaikum.